My name is Alka Sharma, and I am a student of Amity Law School. Uh, so don't lower my opinion about me. With me is the very esteemed Dr. Alka, ma'am. Uh, I would like to hand over the mic to you so that you can introduce yourself. Hello everyone, I'm Dr. Alka. I'm counseling psychologist at Amity University, Noida. And she has helped a tremendous amount of patients. I'm telling you, most of my friends have been gone through tremendous rough patches, and thanks to her, I mean, they are in a very better place. So enough with the introduction and integrity. So let's talk about psychology. Okay. So, my first question would be like, I know the answers to the question, but for the sake of the general audience, does therapy work? Because there is such a huge amount of stigma attached to it कि थेरेपी के बजाय 700 रुपये खर्च करने के बजाय पिज्ज़ा खा लो, उससे ज़्यादा खुशी मिल जाएगी. So, what do you think should be the response for that? I think therapy is very effective. Uh, if anybody is having problem, if they're not mentally healthy, and if they are not feeling expressing themselves, uh, their therapy helps them. Through I think, therapy, they yeah, can sorry. express everything what they cannot express without therapy. Some things I don't think you cannot share with your parents or even your best friends. Right, So there must be someone you can confide to who can be non-judgmental. right. So that's one of the main fundamentals of therapy. The second, I believe, you are more of an expert in that than me. But the second one is that unconditional positive regard. No matter what the person did, what bad the thing they committed, you still have to accept that that person is still a human being. Human beings make mistake, and the fact that they are coming to you to get themselves to improve is a miracle in itself. True. So what kind of patients do you deal with? Uh, Generally, mental health issues, Yeah. stress, depression, anxiety, panic attacks. Yeah. एंड Most of, ऐसा yeah, भी होता है कि मतलब वो खुद सेल्फ डायग्नोस करके आते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया तो मेरे को डिप्रेशन हो गया. right. It happens various times. मतलब they do not fit the DSM criteria, but मतलब they just have to label themselves and फिर और बुरा फील करते रहते हैं. Actually, they overthink and वो गूगल करके आते हैं, बहुत सारी हाँ. बातें खुद से एक्सप्लोर करके आते हैं. लेकिन half knowledge is It is very bad. dangerous, right? हाँ. So मतलब इतने वो सालों से आप एक्सपर्ट, साइकोलॉजी पढ़ रही हो, मतलब राइट, आपको ज्यादा पता होगा. राइट. तो वो गूगल आपको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. गूगल, अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे या उनसे सजेशन लेंगे तो जी. आपको ज़्यादा अच्छी सजेशन मिलेंगे, बट गूगल में आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको रियलिटी नहीं पता चल पाएगी. Plus, Google is also not tailor made for you. It is for millions of people. Like Google कंपनी इसलिए नहीं बनी है कि मतलब XYZ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इट इज जस्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन.
सो व्हाट द थेरेपिस्ट डज इज कि आपकी खुद की प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। गूगल तो ये बोलेगा कि ये करो वो करो, क्या पता आपके लिए वो सही नहीं हो। राइट। हाँ, तो that's why therapists are so important, and the stigma that is attached to them कि mentally weak है तो बंदा फंक्शन नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, तो ये ये स्टिग्मा तभी ये स्टिग्मा तभी तक है जब तक आप एक बार थेरेपी ले नहीं लेते। अगर आप नहीं एक बार थेरेपी ले लेंगे, जी, then you'll come to know कि what is the importance of therapy. it is not with the patient, I believe, the stigma, it is with the family, the person Right, who will be funding the therapy. right, right. Actually, they are not aware about they don't have awareness about therapy, right? If we spread the awareness, then I think they'll be open to all that therapies and all psychology treatment. They think that if their child is depressed or anxious, that they are mentally weak, that they have some mental psychological problem. That is what their thinking is. And Yeah, they think that, and actually, because of social stigma, they don't want their kids to go there for any therapy session or uh, for any mental treatment. yeah, उनको उनको ये नहीं पता कि अगर वो नहीं जाएंगे hmm, थेरेपिस्ट के पास या किसी एक्सपर्ट के पास, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और वर्स्ट होते और बढ़ जाएगी। गई। सही बात राइट। है। तो जितना जल्दी वो उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उतनी जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये भी तो है कि द अमाउंट ऑफ थेरेपिस्ट आर मच मच लोअर देन द पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे चार्ज सो मच, तो पेरेंट्स आर ऑलरेडी रिलक्टेंट कि मतलब 2500 3000 इतने पैसे तो खर्च नहीं कर सकते एक सेशन के लिए, तो राइट, या दिस इज आल्सो द सिनेरियो, बट आई थिंक बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं और कुछ थेरेपिस्ट ऐसे भी हैं जो कि कम चार्जेस में भी थेरेपीज करते हैं। हम्म, तो अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दूसरे थेरेपिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। बट ज्यादातर एक और स्टिग्मा है यहाँ पर कि अगर आपने गूगल पे सर्च किया बहुत सारे थेरेपिस्ट और सबके रेट, किसी का 1500 पर सेशन है, किसी का 2000 है, किसी का 3000 है, और उसी सब में अगर आपको कोई 500 या 600 वाले थेरेपिस्ट मिल गए, मे हम्म, बी वो उनसे ज्यादा ज्यादा अच्छे हैं थेरेपिस्ट, बट उनके हम्म, रेट देखकर उनको ये ऐसा लगता है कि शायद ये इतना कम चार्ज कर रहे हैं तो हाँ, उतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छे नहीं होएंगे, ये हमारी राइट, मेंटालिटी है राइट। इकोनॉमिक्स तो से। राइट, दिस मेंटेलिटी की वजह से वो उन सस्ते वाले के पास नहीं जाते। बट आई आई वुड सजेस्ट यू कि आपको वहां पर भी एक एटलीस्ट एक बार एक्सप्लोर करके तो देखना चाहिए। क्या पता राइट, आपका वहां से काम चल जाए। राइट। And one more thing, what my youth does is that instead of dealing with their problems or going to the therapist, like it is very hard, right, to deal with your problems, to deal with your trauma, past experience. So what they do is substitute that for alcohol or hard drugs so that they numb the pain. So राइट। what are your views about that? एक्चुअली उनको अवेयरनेस नहीं है। उन्होंने जैसा सुना है कि थेरेपिस्ट के पास तो जा नहीं पा रहे हैं, अफोर्ड हम्म, नहीं कर पा रहे हैं वहां पे जाना, घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं वहां पर। तो हम्म, उनको ऐसा लगता है कि ये शॉर्टकट मेथड है, जो कि हम्म, उन्होंने अपने फ्रेंड्स से सुना है या फिर कहीं से भी सुना है कि अगर हम वो वाली साइड में नहीं जा पा रहे हैं तो फिर वो ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ऑल। राइट, क्योंकि किसी फॉर्म में तो डिस्ट्रेस हटाना ही है उन्हें, बिकॉज दैट राइट। इज वेरी अनकंफर्टेबल।
बट उनको दूसरे चीज भी तो एक्सप्लोर करना चाहिए, वो हमेशा नेगेटिव साइड में ही क्यों जाते हैं? एडिक्शन की तरफ, अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ। वो अपनी हॉबी भी तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी और तरह से भी तो खुद को खुश रख सकते हैं। नेगेटिव साइड में जाकर ही क्यों खुश करना है अपने आप को? मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु ग्रेविटेट टूवर्ड्स एडिक्शन have underlying psychological issues that they are not ready to deal with. That's why they self medicate. राइट। सो इसलिए वो मतलब हॉबीज नहीं बनाते या मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं करते, बिकॉज दे हैव डीप रूटेड इश्यूज एंड दे आर अनएबल टू डील विद इट. सो आई डोंट थिंक दे कैन लाइक परफॉर्म डिफरेंट हॉबीज when there is so much pain inside their body. लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी तो है ये। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, तो Hmm. फिर वो उस नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे। तो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी तो वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। I mean, I respect parents a lot. They have given us birth, they have given us the best education. But one of the main things that they have lacked is negligence towards their children. And ये जो formative years होते हैं जब the child needs the parents the most to know what is morality, what is right or wrong, what is abandonment issues, who's right, who's wrong. ये सब जब उनके फ्रेम ऑफ माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आती, देन दे रिवॉल्व अराउंड देयर फ्रेंड्स एंड देन मतलब दे इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ देयर फ्रेंड्स कि वो कैसे सोचते हैं, एंड दे गेट द इनकरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम देम. सो I think that if you want to have children, you should actually matlab, have the responsibility to raise them. राइट। What do you say? Even I have abandonment issues. My parents neglected me when I was a child, so I know how hard it is to not get clingy and you know uh, be at peace with myself, meditate and not have panic attacks. So all these things, trauma and negligence are at the same category. Both of them have the same impact on your brain. So this kind of what can I say, even the social institutions like school do not affect us as much as our parents do, because they are the biological people related to us. एक second. Is it fine now? Hello? Hmm? सही है. हाँ। हाँ. So that is the thing. What I believe we should do, instead of spending all the money on institutions like Abhas and all that. I mean, they are very good, but if we want something preventive measures, we should hire good counselors in at school
we should do background checks of teachers who are competent enough to guide the children in the right direction. You know what? One incident happened to me. I was in third grade. Okay, so there was a play. So I went to my teacher and I asked her, "Can I be the king, please?" I was a little kid, so it was very exciting for me कि मैं king बनूंगा. So she said, "तुम्हारी king की personality तो लगती नहीं." एंड पता नहीं अभी तक मतलब दैट थिंग हैज स्टक विद मी. तो मतलब school is somewhere that you should like be healthy mentally, physically, secure, safe. But if the teachers are not even competent enough to deal with the child's emotions, child's issues, then what is the point of schooling? That's what I think. I believe that there must be a system that can change the way, because students can't even raise their voice against all these injustices. Enough about that. So, what else do you plan on doing? Are you there? You want me to answer? Yeah. Okay. Yeah, agree. 100% agree. जनरली क्या होता है कि टीचर्स को टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। वो कई बार अनजाने में ऐसी बातें बोल देते हैं बच्चों को, जैसे कि आपको बोला उन्होंने कि आपकी पर्सनैलिटी किंग वाली नहीं है। तो Hmm. वो लाइफ टाइम के लिए उनके उनके माइंड में इस तरह की बातें रह जाती हैं, घर कर जाती हैं, और Hmm. वो उनकी पर्सनैलिटी को लाइफ टाइम नेगेटिवली इफेक्ट करती रहती हैं। So I Right. think there should be a manual, there should be a book, there should be some instructions for all the teachers and caregivers कि आपको बच्चों को क्या बोलना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो, और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे अपने लाइफ में नेगेटिव कमेंट्स सुनते हैं उतना ज्यादा उनकी पर्सनालिटी को वो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो ये स्कूल्स में सारे टीचर्स के पास एक इस तरह का मैनुअल होना चाहिए, इस तरह का एक गाइड होना चाहिए कि Right. व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। Right. उससे हम बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अगर हम इस तरह की गाइडलाइंस बना दें टीचर्स Very के लिए। hard to implement. Most of the serial killers, murderers, when we profile them and we do a background check on them, we find out that their childhood was very bad. Like their peers made fun of them, their teachers ridiculed them. So I think if we change the system from the root cause, then most of the crimes would not occur and people would be healthier in general, because if they get the proper nourishment, even if their genes are predisposed to be antisocial or depressive, but if they get the right environment, at least they would have some sort of control over their life. That is what my thinking is. But life happens, anything can happen in life. We also have to deal, we have to adapt, right? Because nothing is certain. So राइट। this is one of the core principles of I think Buddhism, that you have to
adapt to whatever circumstances you are dealt with. So that stuck with me. So, so tell me, which patient you encountered was the most interesting one? Um, Let me think about it. Actually, there was various, but I'm thinking about the most interesting. Most of the children must have come to you for like relationship advice and breakup and all, right? Yes, Because of yeah. the Um, college. Yeah. कभी Even कभी I. ऐसा होता है, Hmm. वो आते तो रिलेशनशिप इशू के लिए ही है, Hmm. लेकिन आ, उतना करेज नहीं होता उनमें कई बार कि वो अपनी रियलिटी एक बार ही फर्स्ट विजिट में आते ही बता दे, तो वो स्टार्ट कहीं और से करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे दे कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप इश्यूज, Right. बट आते ही वो सबसे पहले वहां से स्टार्ट नहीं करते, वो कहीं और से स्टार्ट करते हैं। कभी पहले अपने किसी फ्रेंड की स्टोरी बताते हैं कि Hmm. मेरे फ्रेंड की बहुत परेशान है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, Hmm. एंड मुझे क्या करना चाहिए अगर ये इशू है उनकी लाइफ में। तो फिर जब हम उनको थोड़े से सजेशन देना स्टार्ट करते हैं बिना बायस्ड हुए, तो फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन स्टोरी। Right. Right. एंड वहां से जब उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, तो पहले तो स्टार्टिंग में दे आई मीन दे स्टार्ट क्राइंग। वो खुद को रोक ही नहीं पाते, उनके टीयर्स रुकते ही नहीं है, एंड 5 to 10 minute दे आई मीन दे क्राई क्राई एंड क्राई, Right. एंड फिर थोड़ी देर बाद जब वो सेटल हो जाते हैं, देन दे डिस्कस देयर फीलिंग्स, थॉट्स Right. एंड फीलिंग्स। But. एंड हाँ, फर्स्ट विजिट में वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं Hmm. एंड बहुत क्रैंकी होते हैं, Hmm. बट मैंने ये हमेशा ही नोटिस किया है, ये चीज ऑब्जर्व किया है हमेशा, Hmm. कि सेकेंड विजिट के बाद उनके टेयर्स हमेशा, ज्यादातर 99% लोगों के टेयर्स रुक जाते हैं, क्योंकि जितना भी बॉटल्ड अप हुए हुए इमोशंस होते हैं उनके, वो फर्स्ट Right. विजिट सारे निकल जाते हैं, हाँ एंड जी. उसके बाद अ, वो काफी हैप्पी नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा कंफर्टेबल लगता है भी हो कि, जाते हैं आपके साथ. सॉरी, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं आपके साथ. राइट, उसके फर्स्ट विजिट के बाद वो कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी सारी बातें बहुत अच्छे से शेयर करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। हम्म. मेरे को लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप, ये ब्रेकअप, मतलब हमारे एज में ये सब जो चलता रहता है, फ्रेंडशिप, मतलब लड़ाई हो गई, ये सब, दिस इज ऑल सरफेस लेवल. बट डीप डाउन, जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया, तो it is not that our relationship is not working. It may be because I may have abandonment issues and I am scared of losing that person, so I get clingy. I'm just giving you an example. So ओके, this is like surface level ki you should talk to them, you should like send them flowers, but to actually work on yourself, you really have to dig deep inside yourself, and you have to know yourself, and that is the hardest thing you can do. इट्स नॉट हार्ड, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ।
वही नहीं मिल रहा ना इसमें। अगर आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद की एबिलिटीज पर ही बिलीव नहीं है, तो आपको खोने का डर लगेगा दूसरे इंसान को। See, बट it's इफ not it's not about confidence. It's about whenever I dig deep into that, it's very traumatic because all the flashbacks that come into my mind about the childhood, those are very frightening. And I can't speak anything else about that. And I'm sure everyone, matlab, most of the people must have suffered the same thing. So therapy is really important for them to, extract that underlying issues. Otherwise they'll get stuck in that same pattern of abuse and vicious cycle of harm. What do you think? Asha, you mentioned you have a clinic also. Hello? Can you hear me? Right. Okay. Okay. So, what all ways do you think? Hmm. So I'll ask you last question. I have taken enough of your time. Uh, what all ways can a person, improve his mental health? they should work on their achievements, I mean they should work on their hobbies. Right. मेंटल हेल्थ क्यों खराब होती है हमारी? कि अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसा कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, हमारे चाइल्डहुड में, Hmm. जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, Hmm. जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है मेरी सराउंडिंग में, वो सब नहीं हो रहा है Right. मेरी। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होती है। Hmm. तो अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस, उसकी उतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी हॉबीज पर काम करना चाहिए और अपनी हैप्पीनेस पर काम करना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करके उस पर काम करेंगे, उतना ज्यादा विल फील हैप्पी, और जितना ज्यादा हम हैप्पी फील करेंगे उतनी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। Okay, that was a really nice answer. Okay, I'll ask everyone if they want to connect to you. Uh, I'll forward them your Insta ID. In the And last, I want to convey to yeah, all, yeah. talking about mental health is not attention seeking. People die in silence every day due Hmm. to this judgment, and then people finally say, I wish they spoke up. We live in a society that stigmatizes mental Right. health but mourns suicide. So I request, please break this stigma and do come forward to share your thoughts and feelings, and please motivate and encourage others also to do so. Thank you so much. Thank you.